Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Now we are going to deal with phylum Aschelminthes. Okay, so what are the organisms which are included in this? We'll see that. Okay, so phylum Aschelminthes, which is also known as, we can see they are also known as what? They are the worms. Nematodas के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? But it is a phylum of unsegmented worms. कैसे worms है? ठीक है, unsegmented. Okay, and which are covered by the cuticle. Okay, so it is covered by a body wall having a cuticle and epidermis. Cuticle and epidermis is the body wall, okay, which is made up of. So the phylum Nemathelminthes, okay, was created by Gregenborn in 1859. तो ये Nemathelminthes किसने create किया? Gregenborn ने 1859 में. But it was named as Aschelminthes by Groben in year 1910. ठीक है, इससे पहले क्या है, वो Nemathelminthes के नाम से ही जाने जाते थे, this phylum, and it was named as Aschelminthes for grouping the roundworms and the related animal. जितने भी roundworms है and इससे related जितने हैं सारे इस ग्रुप में ऐड हो गए. Okay, so Aschelminthes commonly known as roundworm. ठीक है, they are roundworm. Roundworm के नाम से भी आप बोल सकते हो. Now, these are characterized by the presence of pseudocoelom. False coelom characteristic feature है again. ठीक है, so Aschelminthes, they are having false body cavity, that is the false coelom. Okay. Now, what about the habitat? Where they are found? They are free living. ठीक है, free living है, aquatic है, terrestrial है, free living, aquatic, terrestrial. Few forms are parasitic. ठीक है, parasitic on plants as well as on the animals also. ठीक, so हर तरह से they are been found in every habitat, mostly free living, aquatic, terrestrial, parasitic. ठीक है, now body form. What about the body form? You can see the male and the female ascaries, जो कि Aschelminthes phylum में आते हैं. So ascaries, male and the female are separate. Okay, and you can see the male size is little bit smaller than the female. Compared to female, the male ascaries are smaller. Okay, so the body is how? What does it look like? It is cylindrical. कैसा है body? Cylindrical है, elongated है, tapering at both the end. ठीक है, both end जो आप देख रहे हो end pass, ठीक है, the end part is known as, you can call it as tapering end. ठीक है, both side it is tapering, elongated, cylindrical. The animals are called roundworms. Why they are called roundworm? Because they appear circular in cross section. अगर आप ascaries का cross section cut करोगे, ठीक है, you will get a circular structure. Okay, तो आपको cross section cut करने के बाद कैसा दिखेगा? Circular. That is why they are known as roundworms. Okay, I hope it is clear. Now the level of organization and the body plan. So which level of the organ system is found? So the body organization is organ system level. कैसा है? Organ system level of organization means organs and organ systems are well developed. It has a tube within a tube. ठीक है, tube within a tube. मतलब जैसे कि आप देख सकते हो Aschelminthes, they are elongated. ठीक है, longitudinal body होता है, उसके अंदर भी एक tube like structure होता है. ठीक है, which is mostly the gut part. Okay, so we can call it, it has a tube within a tube. So that type of the body plan is there. Germ layer कैसा है? Triploblastic होते हैं Aschelminthes. Okay, because they are having 3 germinal layer. ठीक है, 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. All are found over here. ठीक है, in their body we can see all the dermal layer, 3 dermal layers, so that is why they are triploblast. Now, the body cavity. Cavity कैसा है? They are pseudocoelomate. Pseudo, false coelom होता है as the cavity present between the body wall and the gut wall. So body wall है and the gut wall. इसके बीच में जो cavity है, that is, the cavity is there but it is false cavity, so pseudocoelomate. It is not lined by the mesodermal epithelium. Mesodermal epithelium level से lined up नहीं होते हैं gut wall. Okay, so you can see here एक Aschelminthes, that is, let's see, take an example of ascaries.
ठीक है, इट हैज बीन कट एंड देन वी कैन सी जो बॉडी का डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहा है, डिफरेंट डर्मल लेयर. सो द आउटर वन, ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर है, द आउटर लेयर दैट इज नोन एज एक्टोडर्म. सबसे बाहर वाला क्या है? एक्टो. ठीक है, द आउटर वन इज एक्टोडर्म एंड नेक्स्ट टू दैट, ठीक है, द मसल्स लेयर. नेक्स्ट उसके बाद वाला जो मस्कुलर लेयर है दैट इज नोन एज, थोड़ा थिक होगा मस्कुलर लेयर, सो दिस इज मेसोडर्म. ओके, एंड विद इन दैट कैविटी है इस साइड में. यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा स्पेस जो है, ये व्हाइट वाला पार्ट जो यहाँ दिख रहा है, ये कैविटी है. ठीक है, बट द कैविटी इज फॉल्स, सो इट इज स्यूडोसिलोमेट. ठीक है, ये कैविटी है pseudo. Okay, and the central one, this is known as endoderm. ये है endoderm. ठीक है, तो जो डर्मल लेयर है द pseudocoelomate, तो जो कैविटी है किसके बीच में है? बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. विद जस्ट इट इज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. बॉडी वॉल जो है और गट वॉल, उसके बीच में है कैविटी. ओके, नाउ स्केलेटन्स एब्सेंट. एस्करीज में कोई स्केलेटन्स नहीं देखने मिलते हैं, ना ही एंडोस्केलेटन ना ही एक्सो. ठीक है, नाउ द बॉडी वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इलास्टिक क्यूटिकल. ऊपर का जो सबसे बॉडी वॉल में जो ऊपर का लेयर आप देखते हो दैट इज अ क्यूटिकल, एंड आफ्टर दैट देयर इज एपिडर्मिस. उसके बाद आता है मस्कुलर लेयर. ठीक है, सो आउटर वन क्या हो गया? दैट इज क्यूटिकल. ओके, आफ्टर दैट बीनीथ दैट देयर इज एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर होगा, एंड आफ्टर दैट मस्कुलर लेयर. ठीक है, देयर इज मस्कुलर लेयर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर आप एक एस्करीज बनाओगे, ठीक है, यू जस्ट मेक एन एस्करीज. ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे आप देखोगे, वन इज माउथ रीजन एंड अनदर इज एनस पार्ट. So alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx, and pharynx का भी development बहुत proper होता है. ठीक है, so two openings are also there, mouth and anus, so digestive system complete हुआ. Okay, now respiratory system, exchange of gases take place, but how? Through the body surface. ठीक है, Aschelminthes they are having the cuticle layer, cuticle के बाद epidermis है, तो diffusion के through आसानी से respiration हो पाता है. ठीक है, exchange of gases occur through body surface by diffusion. Now what about the excretory system? How do they remove their waste product? Okay, so it consists of gland which is also known as canal. okay, glands होते हैं, या तो canals होते हैं या दोनों होते हैं. It has H-shaped excretory system of canals, and renate cells is found in ascaries. Okay, so you can see excretory pore is over here, terminal duct है, network of canaliculi. ठीक है, मतलब networks of excretory cells है. In this way you can see H shape, एक H shape का structure दिख रहा है. ठीक है, so H shape excretory system of canals and renate cells are found. Now sensory system of Aschelminthes consists of papillae, जो कि माउथ रीजन के पास में होता है. papillae which is very tactile. okay, then amphids, you can see amphid part भी यहाँ पे है. amphid which is chemoreceptors, कोई chemicals हो तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए काम आता है. ठीक है, phasmid which is glanduloso, ठीक है, glandulo sensory cells, phasmid. okay, now there are ciliated pits also and eye spot that is photosensitive होते हैं. ठीक है, so eye spot, ciliated pits, phasmid, amphids, papillae, these are acting as a sensory system in Aschelminthes. Now circulatory system, whether the blood is present in them or not. So we know very well that there is no blood, so the blood vascular system is absent. Blood vascular system is absent. Circulation take place, but how? Through hydrolymph. Hydrolymph के थ्रू होता है, या तो pseudocoelomic fluid. Pseudocoelom में जो fluid है उसके थ्रू होगा circulation, और through hydrolymph. Now the nervous system. Nervous system of Aschelminthes
they have, it consists of circumpharyngeal ring. Circumpharyngeal ring एक circular form में pharyngeal region के पास एक ring होता है that give rise forward as well as backward. So nerve that extend forward also and backward also. So you can firstly see the whole body of Aschelminthes. Pharynx part है mouth के nearest पे, ठीक है. Then neuronal cell bodies are there. Then here dorsal cord and the ventral cord is there. Okay, somatic muscles ka presence hai, commissures are there. Okay, so here this part you can see, this part is known as circumpharyngeal ring. Circumpharyngeal ring, जो pharynx region के पास एक ring like structure बनता है, ठीक है, which extend the nerve cord forward as well as backward. Now we can see that they are having the proper system, organ systems दिख रहे हैं. Sexes are separate, male and the female Aschelminthes, that means ascaries, ठीक है, तो separate होते हैं. Separate है, that means dioecious. Male and the female are found in a different body. Okay, distinct है. Often females are longer than the males. Yes. Fertilization, internal and development कैसा होता है? May be direct or indirect. किसी किसी केस में larval stage होते हैं, किसी में नहीं भी. So development may be direct, that means the young one resembles the adult. Direct development means directly the young one resembles their parent. But अगर indirect development हो तो larval stage will be present. So during indirect development larva is present. अब larva अगर present है, so which type of larva? कैसे larva किसमें present है? Indirect development include filariform larva in ancylostoma. ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा में किस तरह के लार्वा है? फिलैरीफॉर्म लार्वा. माइक्रोफिलैरिया इन वाउचेरिया. वाउचेरिया में क्या है? माइक्रोफिलैरिया. दिस टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड. एंड रैप्डिफॉर्म लार्वा, ये एस्करीज के लार्वा है. ठीक है, एस्करीज के लार्वा का क्या नाम है? रैप्डिफॉर्म लार्वा. नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच आर बीन गिवन ओवर हियर ऑफ एस्केलमिंथस. ठीक है, इसमें आता है एस्करीज ल्यूमरिकॉइड, जो कि राउंडवर्म के नाम से एक कॉमन नेम है. ठीक है, वाउचेरिया विच इज नोन एज फिलेरियल वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा हुक वर्म है, एंट्रोबियस विच इज स्पिन वर्म, एंड रैप्डेटस. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू राउंड वर्म्स और एस्केलमिंथस. नाउ वी विल सी व्हाट आर द यूनिक फीचर्स अबाउट दिस एस्केलमिंथस. ठीक है, सिंशियल एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का प्रेजेंस होना ये एक स्पेशल बात है. यहाँ पे बॉडी वॉल मस्कुलेचर है, ठीक है, मसल्स के बने हैं, एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स के. Pseudocoelom is present and the body cavity without a lining. Body cavity है but there is no mesodermal epithelium. ठीक है, without the lining of mesodermal coelomic epithelium. False coelom है with no mesodermal epithelium. Non-muscular intestine, जो intestine part है, it is non-muscular. Okay. Now about the advancement over flatworm. How Aschelminthes are more advanced than Platyhelminthes, which are flatworms. Platyhelminthes flatworms है, तो उनसे कैसे advance हो गए ये Aschelminthes. ठीक है, so complete digestive system है Aschelminthes के पास. Fluid filled body cavity है and separate sexes है, so that means they are more advanced than the flatworms. Now we have came to the end of this phylum Aschelminthes. Thank you for watching. In the next lecture, we'll cover up the next Annelida part. Okay, thank you.